नमस्कार जय जगन्नाथ आपन स्वागत करुच्ची। I hope audio and video both are working well. So let's begin the discussion. ता बरोबर मैं आपन कहि रखे कि आपण माने जेहेतु कहितले गोटे एजुकेशन इन ओडिशा उपरे वीडियो lecture गोटे बनेबा पई. So that is the reason I have chosen this topic. So let's begin the discussion. If you are watching it live, so I hope audio and video both are working well. चलो तो स्टार्ट करिवा. तो देखो ओडिशा रे एजुकेशन को जदि आपण देखिबे कि यदि क्वेश्चन आसे कि सिंपली डिस्कस द एजुकेशन सिस्टम इन ओडिशा और सिंपली आपण कहि परिबे कि कोन कोन सरकार कर इनिशिएटिव अछि एजुकेशन सिस्टम को नै कि सरकार कोन कोन पॉलिसीज फ्रेम करिसेंती एजुकेशन सिस्टम को नै कि जहाँ भी क्वेश्चंस आसीबो ता विषय हमें पूरा कंप्लीट डिटेल रे एटा आलोचना करिवा. तो फर्स्ट आपण देखंतु मो स्कूल अभियान करके गोटे सरकार स्टार्ट करथिले. फर्स्ट कौन ना मो स्कूल अभियान करके सरकार गोटे स्टार्ट करथिले. मो स्कूल अभियान होची यूनिक इनिशिएटिव of the state government was included under the purview of the Odisha's 5T initiative on the 12th January 2021. जो 5T transforming the Odisha या 5T initiative माध्यम रे to transforming the whole education system आपण देखिथिबे मॉडल स्कूल्स गुडी को जो अछि मॉडल स्कूल रे नुवा इंफ्रास्ट्रक्चर हो क्वालिटी एजुकेशन हो से सब फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जाउची कहा माध्यम रे 5T इनिशिएटिव माध्यम रे सेत पई आदर्श विद्यालय मध्य स्थापना करा जाउची एवं जो एक्जिस्टिंग स्कूल्स गुडी को अछि ताकू मध्य डेवलप करा जाउची. राइट तेनु आपण देखिबे टू रीबिल्ड द प्राइड ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल द स्टेट हैज लॉन्च्ड an unique initiative called the 5T high school transformation program जहाँ माध्यम रे तर स्लोगन कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एस्पिरेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एस्पिरेशंस ता माने होची जो आपनकर एस्पिरेशंस अछि से एस्पिरेशंस को आखि आगे रखिकी आमे स्कूल्स गुड को कोन करछु ट्रांसफॉर्म करछु जोटा कि मो स्कूल अभियान अंडर. ठीक अछि यदि मो स्कूल अभियान को नै कि भी प्रश्न आसे कि मो स्कूल अभियान को भली भाव रे ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम इन ओडिशा सिंपली आपण सेठी लिखि परिबे ना 5T इनिशिएटिव रे एटा को इनिशिएट करा जाइछि. तेनु यार थीम होची बेसिकली कोन मो स्कूल अभियान रो ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एस्पिरेशन. ठीक अछि ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स एस्पिरेशन. Then the state government has taken extensive steps to mobilize CSR funds from the different corporate houses to the tune of INR 796.5 crore. CSR आपण जानि थिबे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. सब जो कंपनीज अछंती तांगर प्रॉफिट शेयरिंग रो सर्टेन परसेंटेज से माने वेलफेयर एक्टिविटीज पई कंट्रीब्यूट करि थांती. तेनु से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अछि ते फंड को सरकार कोन करछंती मोबिलाइज करूछंती टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट. सेत पे आपण देखिबे व्हिच 2x मैचिंग ग्रांट इज प्रोवाइडिंग अंडर द मो स्कूल अभियान. जो आगुरु जेति की अमाउंट ऑफ फंडिंग होतला वर्तमान 2 times मोर फंडिंग देन द प्रीवियस फंडिंग आपण को देखिबा को मिले.
यदि आप बजेट आलोकेशन देखिए फॉर द स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड ST/SC टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, दैट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड, जोटा कि आगुरु थिला केते 18,404 crore इन 2017-18, वर्तमान सेटा हे जे केते ना 27,324 कोटी टंका, जोटा कि 2022-23 मसिया रे हमको देखिबा को मिलिछि, राइट। तेणु जदि आपण देखिबे जो 5 वर्ष भितर जो इंक्रीज हेछि फंडिंग रा, से फंडिंग रा जो सब्सटेंशियल इंक्रीज हेछि is something 48.5% in this particular 5 years. 48.5% which increase ହେଇଛି ये जो particular 5 वर्ष भितर। Odisha is leading in the adoption of implementation of SDG जो goal अछि आपनकर sustainable development goals in order to ensure inclusive and high quality education for all and to encourage lifelong learning. The government is committed to achieving SDG 4 of the education by 2030। तेणु 2030 पर्यंत सरकार टार्गेट रखिछन्ती कोन ना SDG 4 रो जो गोल अछि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एजुकेशन सिस्टम, से एजुकेशन सिस्टम को अचीव करिबा पई या से जो SDG 4 को अचीव करिबा पई 2030 सुधा सरकार टार्गेट रखिछन। The government of Odisha has launched मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार to encourage the healthy competition and recognition of excellence for the transformed schools and other schools of the states। जो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार competition among the schools आपन को देखिबा को मिलिबो in the state particularly, जोटा कि schools गुडी को कोन करा जाउची ट्रांसफॉर्म करा जाउची competition in the schools। These awards will be presented every year to 50,000 students, 1,500 teachers and other key stakeholders for their contribution towards the greater cause of the strengthening the school education ecosystem in Odisha। तेणु स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम को आहुरी रोबस्ट करिबा पई, हेल्दी करिबा पई एंड इम्प्रूव्ड करिबा पई तो 50,000 students every year will be awarded and 1,500 teachers will be awarded as far as school education is concerned or school education ecosystem is concerned, ताको इम्प्रूव करिबा पई ये अवार्ड दिया जाउची। मन रखियो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ता छडा the implementation of the Right to Education Act 2009, Odisha Right to Children to Free and Compulsory Education Rules in 2010, along with the implementation of the High Schools Transformation Program, paves the way forward to achieve the desired education outcomes in the school education sector। जोड़ा आपनकर national level रे जो act अच्छी Right to Education Act 2009 हो किंबा Odisha Right to Children to Free and Compulsory Education Rules 2010 हो, से जिनसु को आमे कोन करछु स्टेट लेवल रे सेटा को इंप्लीमेंट करिबा पई चेष्टा करछु, राइट। नेक्स्ट देखिबा हमें यदि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स आपण देखिबे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देखिबे ओडिशा स्टेट रो जो एजुकेशन सिस्टम जदि आपण देखिबे 2017-18 रु 20-21 भितरे ऑलमोस्ट अराउंड केते 4 इयर्स, ये 4 इयर्स भितरे को टाइप रो इंप्रूवमेंट हेची आपण देखि परिबे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ PGI स्कोर, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तेणु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होची दैट इज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार को जो एजुकेशन मिनिस्ट्री अच्छी से मिनिस्ट्री एटा को पब्लिश करे। तेणु आज पर द PGI रिपोर्ट ओडिशा परफॉर्मेंस देखिबे 2017-18 रे, यदि 17-18 देखिबे ओडिशा स्कोर केते थिला 734। 2018-19 रे स्कोर केते बढ़िला 734 रु 749 एंड 2019-20 समय रे जो कोविड समय रे आपण देखिबे कि जस्ट 1 ईयर बिफोर द कोविड 838 एंड देन 2021 कोविड समय रे देखिबे 838 रु 877। so this is the graph of the Odisha's performance in terms of education या education sector जो performance अछि, जोटा का हमें performance grade इंडेक्स बोली कहूचे, ग्रेडिंग इंडेक्स बोली कहूचे, से जिनस आपन को देखिबा को मिलिबो ए पर्टिकुलर ग्राफ रे। तेणु एटी केवल जे आपन कहिबे कि ओडिशा अछि इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स आल्सो। तेणु ओडिशा रे ये मार्क्स गुडी को आपन देखिबे या नंबर्स गुडी को देखिबे जहा बेसिस रे आपन देखि परिबे जोटा कि मेजर करा जाउछि PGI भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एटा को मेजर करूछि, राइट। नेक्स्ट देखिबा तेणु एटा को आपन इंट्रोडक्टरी लाइन्स रे लिखि परिबे कि एज फॉर द PGI जोटा कि सरकार या जो ओडिशा सरकार
स्कोर थिला 734 इन 2017-18 बट 2021 रे से स्कोर टी बढ़ी के हिची केते 877। तापर हमें डोमेन वाइज इंप्लीमेंटेशन देखिबा। डोमेन वाइज इंप्लीमेंटेशन इन द सेंस की जो डिफरेंट सेगमेंट अच्छी इन टर्म्स ऑफ अपन कोई परबे लर्निंग आउटकम्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, ये सब जिनस जदि आप देखिए तेज 17-18 रे लर्निंग आउटकम्स जो अच्छी आप देखिए से जिनस थिला आपनकर ये जो कलर्ड रे आप देखिए 134 एवं ई कलर्ड आप देखिए सेटा होची एक्सेस को लेकिन होईची एवं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अच्छी सेटा आप देखिए ग्रे कलर जोटा कि 94 अच्छी। ये जो मार्क्स अच्छी 180, 80, 150 होची टोटल अमाउंट या टोटल स्कोर आपण कहि परिबे। से टोटल स्कोर रो एटा कोन अछि आपण देखि परिबे। लर्निंग आउटकम्स 180 रु 134 आपण देखि परिबे, राइट। एक्सेस अछि केते 69, ते एक्सेस 67 अछि, देन 68 अछि, 71 अछि। त माने एक्सेस रिस्पेक्ट रे भी 17, 18 आउ 20, 21 को दी कंपैरिजन करिवे तबे इंक्रीमेंटल आपण देखि परिबे, गोटे चेंज देखि परिबे, इंक्रीज हे जे। लर्निंग आउटकम्स देखिबे 134, 138 एवं तापर देखिए 138 अगेन 138 लर्निंग आउटकम आपण देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल अछि। आपण दी गवर्नेंस प्रोसेस देखिए, गवर्नेंस प्रोसेस रे बट सिग्निफिकेंट चेंज आपण को देखिबा को मिलिबो। 17-18 रे 223 स्कोर अछि, 18-19 रे 282 स्कोर अछि, 19-20 रे 304 स्कोर अछि, 2021 रे 314 स्कोर अछि। आपण को एटा देखिबा को मिलिबो कोन ना गवर्नेंस सेगमेंट रे इंप्रूवमेंट देखिबा को मिलिबो। सेमती आपण इक्विटी को देखि परिबे, इक्विटी भी ऑलमोस्ट स्टेबल अछि, येलो कलर 214, 190, 219, 221। ये होची डिफरेंट डिफरेंट कोन कंपोनेंट्स वाइज सेगमेंट हमें देखिचे एजुकेशन सिस्टम रो परफॉर्मेंस अछि जोटा कि पीजीआई रो स्कोर्स गुडी को अल्टीमेटली डिपेंड करछि, जोटा कि हमें गोटे इंक्रीमेंटल स्कोर देखिले, राइट। एटा होची ब्रॉडली आपण एटा ए नंबर्स को मेंशन करि परिबे, एते डिटेल रे नगले भी चलिबो। बट जदि किछि इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आसिला किंबा एक्सेस को लेकिन स्पेसिफिकली क्वेश्चन आसिला या लर्निंग आउटकम्स को लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन आसिला तबे आपण ताकू इंडिविजुअली मेंशन करि परिबे। ओके, नेक्स्ट देखिबा। There is a substantial improvement in the school governance process domain and the score has increased to 223 in 17-18 to 314 in 2021. Similarly, due to infrastructure development, improved accessibility, provision of equitable school education facilities, equitable in the sense ki equal opportunity जो create करिबा हो, your relevant domain scores have also increased. Moreover, enrollment rates, gross enrollment rates जोटा में कहूचे, completion rates and other physical infrastructure such as classroom construction, drinking water infrastructure हो, restroom infrastructure हो, teacher hiring are significant thrust areas where development has been observed. तो ये होची different domain अच्छी जो domain रे अपन को slightly development देखिबा को मिलिबो। लिटरेसी रेट को आसीबा। लिटरेसी रेट जदि आपण देखिबे ओडिसा रे लिटरेसी रेट केते 72.9% as per the census 2011. An increase of 9.8 percentage points over the previous 10 years has been recorded. जेतु वर्तमान नुआ सेंसस हेई नाही, यदि आपण देखिबे 2001 रो 2011 जो अछि डिकेड से डिकेड रे जो इंक्रीज हेची आपण कहि परबे लिटरेसी, दैट इज समथिंग 9.8%, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड द 10%। तो वर्तमान जो ओडिसा रे लिटरेसी रेट अछि ऑन एन एवरेज सेटा होची केते एवरेज होची 72.99, तेणु 72.90 होची ओडिसा रे लिटरेसी रेट। ऑलमोस्ट वी हैव अचीव्ड द नेशनल एवरेज रेट। जब आपण 2011 को देखिबे 64% women were literate in Odisha, which was close to the national average of 65.5%. तेणु 11 अनुसार 64% होची women जो माने लिटरेट अछंदी, national average जोटी कि 65.5%, just below 1% of the national percentage. The gender gap in literacy rate जदि आपण देखिबे between the male and female that has been declined, सेटा कमिची। यदि आपण देखिबे 24.9 परसेंटेज पॉइंट्स थिला 2001 रे, वर्तमान सेटा 17.6 परसेंटेज पॉइंट्स अछि केबे 2011 रे, दैट हैज बीन डिक्लाइंड। यदि 71st राउंड ऑफ एनएसएस सैंपल सर्वे आपण देखिबे जोटा कि 2014 रे हेतिला, तबे लिटरेसी रेट इन ओडिसा वाज 7.5% ओवरऑल, with male and female literacy यदि आपण देखिबे 83
67.2% and 67.8% respectively. तामाने जो जेंडर गैप अच्छी से गैप टा भी धीरे धीरे कौन होची नैरो डाउन ही की आसुची. आपण जदि क्वेश्चन एजुकेशन ऊपर किछि भी आसे देन यू कैन स्टार्ट विथ द लिटरेसी रेट. और जदि जदि आपण कंपैरिजन करबा को चाहिबे मेल फीमेल रो डाइवर्सिटी को देखैबा पई देन यू कैन आल्सो यूज दीज डेटा जोटा कि सेंसस 2011 अनुसार भी अच्छी प्लस 71st राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे अनुसार भी जोटा कि 2014 मसिया हेतिला ताकू भी आपण हाइलाइट करि परिबे. राइट, चलंतो नेक्स्ट जिबा. ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन जो अच्छी स्क्रिप्टिंग हिस्ट्री इन ओडिशा एजुकेशन ओडिशा. तो जदि ओडिशा रो पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी ऊपर आसे तो आदर्श ग्राम विद्यालय ऊपर से माने क्वेश्चन पचारि परन. ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन इज प्रोवाइडिंग फ्री क्वालिटी एजुकेशन. सबुठु बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट होची कोन इन इंग्लिश तो स्टूडेंट्स स्पेशली को रीजन रे सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. अर्बन रे न थाए सेमी अर्बन अच्छी जोटा ट्रांजिशन रे अच्छी रूरल रु अर्बन को सेमी अर्बन प्लस जो रूरल एरियाज अच्छी से जगह टोटल 315 ओडिशा आदर्श विद्यालय आपको देखा मिले ओडिशा रे जोटा कि ऑपरेशनल अच्छी जोटा एकेडमिक सेशन अच्छी 2022-23 रे ऑलमोस्ट आप देखिए 1,02,253 स्टूडेंट्स आर इन ओडिशा आदर्श विद्यालय आउट ऑफ विच 58,343 आर गर्ल्स एंड गर्ल्स कर नंबर्स अधिका बॉयज कर नंबर्स कम अच्छी आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग इन द ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन. ठीक अच्छे 85 केजीवीपी जोटा अच्छी टाइप 4 गर्ल्स हॉस्टल मानकर जोटा अच्छी सी भी फंक्शनल अच्छी कहा प्रेमाइसेस रे ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रेमाइसेस रे हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा जाउची कहा को गर्ल्स स्टूडेंट्स मानकु सो दैट ड्रॉप आउट रेट को हमको कम करिवा पई सो दैट एवरी फैसिलिटीज वुड बी प्रोवाइडेड. एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन रे देखिबा elementary and secondary education equip with a fundamental understanding of numerous topics, right? Numerous topics, the ability to think critically and creatively and learn practical skill experience. It also plays a crucial role in achieving SDG 4, provision of scholarship, recruitment of qualified teachers and educators, and the development of adequate infrastructure contribute towards the development of elementary and secondary education. The government of Odisha is committed to foster quality infrastructure under the 5T program and human resources as well. यदि आप gross and net enrollment ratio देखिए primary and upper primary levels, this has consistently improved. यदि आप gross enrollment को देखिए simply तेबे सेटा almost आमे 100% achieve करिवा पाखापाखी अच्छु. almost आप कहि परिबे कोन universal enrollment ratio that is something 98.03 आप देखि परिबे ठीक slightly. Gross enrollment जदि आपण देखिबे the gross enrollment ratio refers to proportion of all students enrolled at a given level of education to the population of the relevant age, whereas the term net enrollment ratio, this is the difference between the gross and net enrollment ratio, only considers students who fall within the designated age range, that is the 6 to 11 years in the primary and 11 to 14 years at the upper primary levels. Almost आपण कहि परिबे प्रथम रु सप्तम पर्यंत सेटा को प्राइमरी बोली धरुचे एवं 11 रु 14 जोटा अछि सेटा को हमें जोटा 8th रु 10th पर्यंत दैट इज द अपर प्राइमरी लेवल जोटा हमें हाई स्कूल बोली कहउचे. ग्रॉस एंड नेट एनरोलमेंट रेशियो जे देखिबे ऑफ द स्टेट्स तापरे आपण देखि परिबे 92.26% होची ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड 83.0% होची नेट एनरोलमेंट रेशियो फॉर द ईयर 2021. यदि आपण अपर प्राइमरी लेवल रे देखिबे तबे ग्रॉस एंड नेट एनरोलमेंट रेशियो ग्रॉस होची 90.03%. दैट मीन्स आपण सिंपली कहि परिबे कि व्हाट वी कॉल द 100% ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एनरोलमेंट या यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम या यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन. बट प्रॉब्लम एठी गोटे कोन देखा जाउची यदि आपण अपर प्राइमरी रे देखिबे एनरोलमेंट रेशियो केतिकी 68.24%. दैट मीन्स ड्रॉप आउट रेट एठी हमकु सबुटो अधिका देखिबा को मिलु. राइट, प्राइमरी लेवल रे तो अछि 98.03%. सबुटो प्रॉब्लम टा जोट देखा जाउची सेटा 68.24%. सेफाली डेफिनेटली हम लोग आएंगे यूपीपीसीएस के ऊपर बहुत जल्दी. उसकी क्लासेस हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म पर. तो 68.24% रेस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 2021.
तो यहाँ पे जो कंसर्न हमें या एठी जो कंसर्न देखा जाउची सेटा होची 60.24 जोटा कि अपर प्राइमरी लेवल। तेणु आसवा ड्रॉप आउट्स रेट्स को ड्रॉप आउट रेट्स कौन अच्छी एवरेज ड्रॉप आउट रेट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22 were found to be zero। ड्रॉप आउट रेट होची कौन ये आपण देखिबे 2021 रो 21-22 होची जीरो। 21-22 रे सेकेंडरी स्कूल जो अच्छे आपनकर ड्रॉप आउट रेट होची केते 27.2%, which the government is undertaking special measures to strengthen the infrastructure। कहीं ना सेकेंडरी स्कूल्स रे एते ड्रॉप आउट कहीं देखा जाउची स्पेसिफिकली अमंग द गर्ल स्टूडेंट्स ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द स्कूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज टॉयलेट फैसिलिटीज हो एंड अदर फॉर्म्स। Odisha has established 182 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya for the 32,150 students in 23 districts for ST and SC girls, 85 residential girls hostel furnished in Adarsa Vidyalaya for 8,500 students, 21 residential hostel for 1297 urban deprived children in 12 districts and 20 hostels for 551। जो hostel facilities को develop करा जाउची only for the जोटा कि आपण देखिबे all those care all those facilities will be provided by the government। सरकार समान को facilities provide करूचंदी सेत पे हमें देखुछु कि hostel facilities समान को दिया जाउची under the to reduce the dropout rates, right। people teacher ratio जदि आपण देखिबे this ratio of students to teachers in a given school year according to RTA Act or Right to Education Act, the PTR, that is a people or student teacher ratio in the primary and upper primary levels should be 30:1 and 35:1 respectively। Odisha's PTR for these levels was better than the required standard at 29:1 and 22:1 respectively। PTR in Odisha at the secondary level stood at 22:1। तामाने गोटे टीचर रे 30 स्टूडेंट गोटे टीचर रे 35 स्टूडेंट बट आमर एठी कोन देखा जाउची गोटे टीचर रे 29 स्टूडेंट एंड गोटे टीचर रे 22 स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन जदि आपण देखिबे हायर एजुकेशन ने सबटो अधिक ड्रॉप आउट आपण देखिबा को मिलिबो। एज पर द 2020 ईयर आपण देखिबे ओडिशा हैज कन्वर्टेड 3 ऑटोनोमस कॉलेजेस इनटू यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज को कन्वर्ट करा जायछि ता मध्यरु गोटे होछि मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी इन कटक, राजेंद्र यूनिवर्सिटी इन बलांगीर एंड कलाहांडी यूनिवर्सिटी इन द कलाहांडी। Odisha State Higher Education Council was established in the year 2017 and since then it has undertaken many proactive steps for improving the quality higher education। कौन quality higher education पाई introduction of the biometric attendance in all colleges। number 1 introduction of the biometric attendance in all colleges। second rollout of common syllabus for the UG program सबु undergraduate colleges पाई गोटिए program। examination reforms and question banks। initiation of proctoral system and provision of fellowship to research scholars and seed fund for young faculties, universities and colleges in the states। seed fund in the sense कि जदि जो माने research and development scientific invention research जो माने करूचंदी से माने को भाई seed fund या initial समय रे किछि funding से माने को करा जाउची for the research and innovation। according to All India Survey on Higher Education there are now 24 colleges per lakh people of age between 18 to 23 years in Odisha in 2019-20, which increased from 23 in 2018 to 19। okay आगुरु 23 टी कॉलेज थिला पर लाख पॉपुलेशन वर्तमान 23 कॉलेजेस है। यदि आपण देखिबे हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 13-14 सिंपली आपण कंपेयर करि परिबे 2021 सहित टोटल एनरोलमेंट होची 7,68,185। एठी आपण देखि परिबे एनरोलमेंट केते बढ़िची 939,433। जेमति एनरोलमेंट फॉर फीमेल अछि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन ऑल कैटेगरीज आपण देखिबा को मिलिबो एंड देन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेल फीमेल एससी एसटी जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी देखिबा को मिलिबो जोटा आगरो 0.82 थिला वर्तमान 0.94 अछि मेल एंड फीमेल। पीपल टीचर रेशियो आगरो थिला 19 दैट इज 13-14 रे वर्तमान अछि केते 24 राइट। चलो increasing number of enrollments in higher education institutions, there has been increase in higher education enrollment in the state। total enrollment in higher education institutions was around 7.68 lakh fees in 13 and 14 right।
मेल जदि आपण देखिबे 4.2, फीमेल देखिबे 3.8, which rose to 9.95 lakh in 19 and 20. The gender parity index जदि आपण देखिबे, how well men and women are presented in the higher education in Odisha, the GPI increased from 0.78 to 0.88 in 1920. এটা simply आपण ए टेबल रो ही देखि परिबे जे को सेगमेंट रे कोन इंप्रूवमेंट हेछि, स्लाइटली से जिंसटा को हमें एठी सेंटेंस रे एक्सप्लेन करूछु। आपण सेम देखि परिबे जो शेड्यूल कास्ट अछि एंड शेड्यूल ट्राइब अछि, से माने भी केमती तांकर एनरोलमेंट हो किबा तांकर परफॉर्मेंस के बळे हायर एजुकेशन रे बढ़ी छि, सेटा भी आपण देखि स्पेसिफिकली एसटी एंड एससी चिल्ड्रेन मानक पई देखिबा। Odisha is one of the leading states in providing residential school facilities to tribal students. The state has 1737 residential schools and about 5,500 hostels for ST and SC students. The state which provide primary to senior secondary education to more than 4.5 lakh ST SC students, of which 2.75 are girls. तो ये हॉस्टल फैसिलिटीज भी एसटी एससी मानक पई दिया जाई छी। तो एठी देखि परिबे एसटी एससी डेवलपमेंट पे कोन सरकार स्टेप्स नै चंदी, किछि नंबर्स आपन को एठी मिल जिवो। ता होची इन द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल 32, हायर सेकेंडरी स्कूल 62, हाई स्कूल्स कोएड दैट इज 234। ये स्टैटिस्टिक्स आपन को सिंपली एठी मिल जिवो, राइट। सर्गिफुल गोटे स्कीम सरकार लॉन्च करिसेंती एससी एसटी कम्युनिटी को पे। सर्गिफुल वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2012 and is a regular annual event for the students starting in the schools run under the aegis of ST and AC department. The children's fair is an endeavor of the ST and SC development, minorities and backward classes welfare department, government of Odisha, to provide children with the opportunity and platform, foster creativity, imagination, facilitate exposure to the different art forms, scientific experiments and many other similar fields. तो आगु जो सिंपली रोट लर्निंग थिला ताकू छाड़ी के बर्तन सरकार कोन इंपोर्टेंस दउचंदी, क्रिएटिविटी पे इंपोर्टेंस दउचंदी, इमेजिनेशन पे इंपोर्टेंस दउचंदी, देन फैसिलिटेट एक्सपोजर टू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स पे जदि से मानकर किछि इंटरेस्ट थाए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे इंपोर्टेंस दिया जाउची एंड मेनी अदर सिमिलर फील्ड्स। कहा अंडर रे ये सार्गिफुल अंडर रे। द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड this year by OMTC, Odisha Model Tribal Educational Society, as the nodal agency. So particularly एटा STSC जो schools गुडी को अछि, स्कूल रे सार्गिफुल फेस्टिवल्स टी कोन करोची ऑर्गेनाइज करा जाउची टू इंप्रूव द skill or improve the educational quality of the education system in or among this different communities. Schemes slightly discuss करिबा and then we'll finish it off. मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार जेमति मु डिस्कस भी करिछि स्टार्टिंग रो, encourages healthy competition and recognition of excellence for the transport school and other schools of the states. प्रथम एटा होची स्कीम, यदि खाली स्कीम्स पचरला कि what are the steps taken by the government to improve the quality education or improve the school education or education system in Odisha. तो फर्स्ट आपण ये जो पर्टिकुलर स्कीम को हाईलाइट करि परिबे। सेकंड स्कीम आपण हाईलाइट करिबे ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन is providing free quality education in English to students especially from semi urban and rural areas. ये जिनसे भी आपण मेंशन करि परिबे। थर्ड, टू सेंटर फॉर एक्सीलेंस सरकार एठी स्टार्ट करिसेंती। गोटे होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग was established in CET जो आपनकर इंजीनियरिंग कॉलेज अछि भुवनेश्वर रे, CET इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज in association with the Tech Mahindra Limited and the other space research and innovation जोटा आपण बुर्ला रे अछि जोटा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी with ISRO collaboration करिके से माने space research and innovation भी स्टार्ट करिছে only to give boost to the higher education. Third होची World Skill Center which would act as a hub for the entire skilling ecosystem and constantly upgrade the quality of the skilling in terms of the service delivery. That chhada Odisha Girls Incentive Program is an add-on cash incentive program aimed at increasing the participation of ST and SC students in the secondary education. Next hochi Mission Subidhya to spread the joy of literacy and numeracy to tribal children in Odisha. Mission Anveshan to provide quality education to ST and SC students. Mission Akanksha to provide hostel facilities in urban areas to ST/SC students studying in post-matric level courses. So these are the different initiatives taken by the government to improve the quality of the education system or the quality or the infrastructure quality of the education system in the whole state, right? So these are the different initiatives we discussed.
जदि भिडियोटी आपको भल लगी डेफिनेटली आप लाइक करूँ, शेयर करूँ एंड सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को, सो दैट यू विल गेट मोर अपडेट्स ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो पुणी थे आम आसबू काली गोटे नुआ वीडियो नहीं कि एंड ऑन ए डिफरेंट टॉपिक स्पेसिफिक टू ओडिशा। ठीक अच्छे, शेयर करूँ, लाइक करूँ एंड सी यू सून। टेलीग्राम चैनल आप क्यूआर को स्कैन करके जॉइन करेंगे एंड यू विल गेट द पीडीएफ एज वेल। थैंक यू।